गवर्नमेंट जॉब्स देने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। इसमें आप लोगों को कई फैक्ट्स मालूम है। डेली बेसिस पे जो केसेस रजिस्टर होते हैं उनकी जानकारी आपसे शेयर की गई है और एक स्ट्रक्चरल इंटरैक्शन मीडिया के साथ करने का भी सोचा गया ताकि जो सवाल आपके मन में हो उसका जवाब हम लोग दे सकें। इसी मकसद से आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट के केसेस के जो बेसिक डिटेल्स हैं, ओवरऑल पैटर्न है, वो आप लोगों को एसपी नॉर्थ और एसपी साउथ बताएंगे और आपके जो सवाल होंगे उसको भी हम लोग उसका मुनासिब जवाब, प्रॉपर रिप्लाई जो होगा वो देने की कोशिश करेंगे। अभी मैं एसपी साउथ को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के केसेस के बारे में आपसे जानकारी साझा करें। Good evening. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. Thank you. Madam, before moving forward, out of 21 accused, how many are women and how many are Women are there are 6 women and there are 14 men. Another 21 accused is There is 6. one female. One. She is at large. So total 7. Amount? The total amount is running to 5 crores and above. मैडम, ये केस का मामला में कितना सालों से ये रजिस्टर फ्रॉड हो रहे थे? This is happening since the year 2015, 14-15. Sir, madam, any political connections? Absolutely till date, no political connections have come forward. Accused are just saying that they were feigning to create a sort of ambience to say that we know. Otherwise, there is no linkage of any political connections at all. ये चेन है ना मैडम, ये अरेस्ट हुआ है एक ही चेन है क्या, नहीं तो डिफरेंट There are different chains. Even to the extent, one of the case that we have got, they said that they will be providing job across the border in Karwar. How many offences has been registered in South total? 12. मैं गणेश गांवकर के खिलाफ जो ऑडियो सबमिट हुआ है उसके बारे में क्या है? We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. Any We have government, sought for certain clarifications from him. any government officials, any connections with them? Absolutely nothing till date. We have sought for information from in this matter from the applicant. What is the political affiliate? Like person think that they approach करता है, and just word of mouth publicity. It is word of mouth publicity. ट्रांसपोर्टिंग ट्रेल में जो यूज झाले की तशी इन्फॉर्मेशन मिळाली. We are unearthing everything. All 12 are linked to each other, separate cases. They are all separate cases.
Ma'am, if they are not connected with any of this, maybe political or this, with so much money they have collected and they have kept that money with them, sir. Yes. Till now they have kept the money with them. Some of the money, because people have started approaching, some have returned some money also through them. Otherwise, what we can see from the case of the lady first one, Pooja Naik, she wanted to have Aishwaram Jindagi. Even what we saw with Deepashri also, she wanted to have the luxurious going around. That's how they invested money, which is with the four-wheeler vehicles and all. We have seized those vehicles. So in any case, she successfully gave a job to someone that finded someone like it. So she maintained the job here. Yet no, not so far, not so far. अशें जाला की बाय लक म्हणजे त्याने पैसे घेतल्या बाय मेरिट्साचेर तो भुरगो कामाक लागला आणि ही आणि 4 जणांनी सांगले वचून की आपल्याच खातीर लागलो कामाक म्हणून अशें बी जालां ना अजूनपर्यंत असं येऊना तेका येऊना म्हणजे पुढे कशी स्टँड जातल्यो म्हणल्यार थोडं फोटोग्राफी म्हणटा तुमी हे करताले आनी एविडन्स कितें आहात We are collecting all the evidence from all sides. We are recording the statements of the witnesses who are coming forward also and giving the statements that there are bank transactions also in some matters where we have found that they have given the money. Now in one of the investigations as we were doing, we found some documents also which were exchanged by those candidates, so-called candidates, to these people, which we have found with them. Sort of appreciate the biodata of theirs. How many people have been duped in South Goa with these cases, in 12 cases? कितल्या लोकांक duped केला यांच्यानी? Right now, more people are coming. Right now, around As of now? around more than 50 people. मैडम इसका एक अभी कंप्लेंट दिया ना वो लोगों ने पैसे भी दिया है बट इसका ऊपर भी केस होएगा बिकॉज ही इज ऑल्सो क्यों पैसे दे की जॉब करने की Right now, these are the victims who have been duped. In disclosure, has anyone claimed any link to any politician or something as well? Till date, nothing has been done. Can we say that all this is part of one organized racket or separate cases? These are all separate cases, not organized. You feel this number will increase now as the day go by from 50 more than that can be? We are encouraging people to come forward and to give the complaints. And so the people with that confidence that has been instilled in them, that they are coming forward and they are giving the complaints. मॅडम ते 20 अक्यूज असं नाही त्यांचे कंप्लेनी कोणी घातले त्यांचे अरेस्ट केल्या काय अक्यूजांनी आणि कोणाची नावं घेऊन मागीर अरेस्ट केले Accused जशे सांगता तशे आमी तांचे मुखार हांचे आणि हाका दिले ताका दिले we have given the name so we have brought them out. So now we also have the cases of the north. We can hear from north. Following complaints from public, North Goa Police has registered a total of 17 cases till yesterday. Of these, 5 cases have been registered in Bicholi Police Station, 4 cases have been registered in Agashi Police Station, 2 cases have been registered in Kodvan Police Station, 1 case has been registered in Old Goa Police Station, and 1 case each has been registered in Mapsa and Kodwale Police Station. In these cases, until now, the North Goa Police has arrested 13 accused persons and more arrests are likely. Some of the persons have been found involved in more than 1 cases. Thus far, investigation which we have conducted has revealed that most of the money was either paid through cash and in some cases it was also paid through bank accounts. In all those cases in which bank transactions are involved, we are working closely with the bank authorities to find out the money trail as to what were the sources and destination of the money. In one of the case, we have also recovered 116 grams of gold. This had been shared with you previously, this information. I would submit that investigation in these cases is continuous and ongoing. Therefore, at this stage,
we would only be able to disclose this many details. Thank you. In 17 cases, how many total accused? As I said, we have arrested 30 persons. total accused. Total accused, we believe, are around 18. What is the cost? How many women, how many men? Some of these accused persons are also accused in cases of South District. So, giving you a clear distinction between women and child at this stage would not be right. And we would be open to share that data later. सर इसमें कुछ इंटरस्टेट कम्युनिकेशंस हो रहा था कोल्हापुर से लेके देखिए इसके अंदर जो नॉर्थ गोवा के अंदर हमने देखा है, इसके अंदर अलग अलग मोडस ऑपरेंडी यूज किया गया, अलग अलग तरीके के नौकरियों को प्रॉमिस करने के लिए। एक हमने केस वर्क किया था जो बिचोलियन पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर किया था, जहाँ पे कुछ समय से हमारे पास एक ऐसी सूचना आ रही थी कि वन लेडी had promised persons that she will give them jobs in railway. So we had registered a case and that accused person has been arrested. She was later identified as one Priya Yadav, who was a resident of Modem in Bicholim. इसके ऊपर 2 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हैं और इसका मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का था that she would say to victims that she had some land in Kolhapur which had been taken over by railways. और रेलवेज ने जब उनसे लैंड ली तो रेलवे ने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनको नौकरी भी देंगे और कैश भी देंगे। और एक बार उन्होंने एक तरीके का ट्रिक भी लगाया विक्टिम्स को ले जाके, जहाँ उन्होंने उनको ज़मीन दिखाई और कहा कि ये रेलवे आपको इसमें नौकरी देगा। एक लेडी उन्होंने हायर की जो एक तरीके से जिसने विक्टिम्स को फ़ोन करके कहा कि हाँ मैं रेलवे से बोल रही हूँ, आप ऐसे फॉर्म भर के भेजो, हम आपको पैसे देंगे। ऐसे करके शी हैड duped large number of persons, and in this case we had recovered 116 grams of gold. And how this recovery happened is also interesting because in some cases she would take the victims to certain places such as places where if you mortgage your gold you get cash. So वो victims को वहाँ ले जाती थी और उनसे उनका gold mortgage करा के पैसे ले लेती थी by saying कि ये मैं वहाँ पे आपको नौकरी दिलाने के लिए यूज़ करूँगी, and she would then just dupe them. So in these cases we have recovered that gold. नॉर्थ गोवा में जितने भी केसेस हैं उसमें से ज़्यादा तो महिलाओं का समावेश है, तो कैसे देखते हैं? देखिए इस तरीके से for us I do not do that gender. For us they are all accused persons. As per FIR, how many women's women names are there in FIR? As I had told you earlier, No, some are separate. some of these accused persons Common, agreed, no problem. are common. But still, for yeah. your this thing, I will read out to you how many of them are female in North Goa. Yeah. Seven persons are female. All these How many FIRs in South Korea can you? वो बताया apart from the not how many victims and the amounts? Yeah, victims and amount in Goa. देखिए the amount is something which is still we are working on, so I would not be able to give you any figure about the amount. The number of accused, number of victims at this stage is around 45, 44 it is. Baki as it is, these numbers are changing on a daily basis as fresh complainants are approaching to us. So common this thing between them, common thing, whether any mastermind or they are operating individually. None thus far. So at this moment, एक जो बिचुलिन का केस है उसके अंदर एक हमारे कांस्टेबल का नाम आया है और he is also named as an accused in the FIR. Following his involvement, he was immediately suspended, and necessary legal action, whatever is under the law, is being taken against him. Any government official involved in None. North Goa? None in law. Sir, if So you at are this- saying that some people from the north, in the north FIRs are also linked to south, तो फिर तो नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा कि कुछ कंप्लेनेंट्स जिन्होंने नॉर्थ में आके कंप्लेन दी है
उनको उन लोगों को एक्यूज माना गया है जिनको साउथ में भी मतलब उन लोगों ने कुछ को नॉर्थ में शूट किया कुछ को साउथ में. So as the press conference has gone and you all have told us about the amount, the accused, everything, and since you are a senior officials, don't you think so? Without senior or topmost leaders, these things can happen because it's jobs issue, especially when we talk about government jobs. Is it not something? Sir? What do you like to say? इन्वेस्टिगेशन जो है ये प्रिजम्पशन पे रन नहीं होता है. इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसमें जिनका भी नाम आ रहा है, जो भी फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन. सर गोवा पुलिस के लिए ये जॉब से हम कितना चैलेंजिंग हो रहा है अभी ढूंढना? नहीं, इसमें मैं मोटे जो इश्यूज जो आपके मन में हैं मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहूँगा, सो दैट कई सारे सवाल जो बार बार मीडिया में आ रहे हैं और पब्लिक डिबेट में आ रहे हैं, उसमें एक सवाल जो अभी आपने किया जिसका जवाब मैंने दिया कि नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो रहे हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करते हैं. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है, ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या वैसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं है. अगर कभी डिसीजन होगा तो आपको जरूर. सर एक्यूज के फोटो मिनिस्टर के साथ दिख रहे थे, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ? मतलब ये केवल फोटो दिखने को लेके कोई वो उसको हम एविडेंस मान लें कि उसकी वजह से कोई उसके अंदर में और चीज़ है, ये मैं कहना नहीं चाहूँगा. लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो जैसा मैंने कहा फेयरली चल रही है, जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन. इस टाइप ऑफ केस ये पहली बार गोवा में ऐसा दिख रहा है सर, इतना एक ही बार आके एक्सपोज हो रहा है. इसमें जो सवाल आप लोगों ने किया है कि क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, इसमें ये चीज़ है कि कुछ ऐसे अक्यूज्ड हैं जिन्होंने मल्टीपल विक्टिम्स को शूट किया. जैसे इन्होंने बताया साउथ में भी केसेज है और नॉर्थ में भी कुछ केसेज है. तीन एटलीस्ट हम कह सकते हैं 3 ऐसे अक्यूज्ड हैं जिन्होंने मल्टीपल या 3 ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने मल्टीपल विक्टिम्स को चीज किया. लेकिन इसके अलावा जो बाकी केसेज हैं वो ज़्यादातर स्टैंड अलोन है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी या ऐसी बात कहना कि कहीं एक जगह बैठ के इस पूरे स्कैम को चलाया जा रहा था, इस तरह की अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बात नहीं है. सर आपने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, बट दीपा श्री एक एक्यूज है और उसका एक ऑडियो है जिसमें विश्वजीत राणे का सीधा सीधा नाम है. तो इसमें जो हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया है, इसमें SP साउथ और बता पाएंगे, उस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगता है कि उसने वो नाम जो लिया है वो केवल अपना लोगों को कन्विंस करने के लिए कई बार इस तरह के टीचर्स नाम यूज करते हैं. उस तरह से आगे कोई कनेक्टिविटी या लिंकेज उसमें स्टैब्लिश अभी तक नहीं है. सर ऐसे कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें फैक्ट चेक किया गया है क्या? सच में ये उनके ही नाम दे रहे हैं क्या? SP साउथ जो है इसके बारे में और
As respects to the audios, what is getting circulated, we are conducting inquiry into the matter. First of all, we should know whether it is a genuine video or otherwise. So such genuineness is not coming forward. Having interrogated the accused version is we were just faking around. We were just faking around to have confidence of the people so that they can dupe people more and more for this. So nothing more than that has come forward in the line of investigation so far. आपने बस सर बोला SIT तो नहीं है SIT अपन नहीं करेंगे, लेकिन एक केसेस है ना जो across the state है और केसेस का jurisdiction भी multiple different है. आपका जो पहले ऐसे केसेस स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट करते थे तो this time why not being the same? मैंने ये नहीं कहा कि SIT इसमें किसी स्टेज पे नहीं बनेगी और एज ऑफ नाउ SIT बनाने का नहीं हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो काफी प्रोफेशनल तरीके से पुलिस स्टेशन लेवल पे भी कंडक्ट हो रही है. ने भी वो एक स्पीक सर्टिफिकेट इलेक्टेड बस किया, उसमें एक भी ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट लिस्ट का है उसका सर्टिफिकेट बेसिस पे, ये भी उसका लिंक हो सकता है उसका सर? नहीं, अभी उस दोनों में कोई ऐसा लिंक नहीं है. Sir, so you are saying it is premature to say that all this is interconnected or part of organized, or what is your investigation suggest? 29 FIRs we have had, but yet to say something separate at the same time everybody is coming. हाँ, जैसा मैंने बताया कि अभी आप देखिए जैसे अभी कल भी कुछ केसेस जो रजिस्टर हुए उसमें बिल्कुल नए कैरेक्टर्स, उसमें विक्टिम भी नए हैं और अक्यूज्ड भी नए हैं. तो मैंने जैसा बताया कि three groups of people वो हैं जिन्होंने मल्टीपल विक्टिम्स को They can be the ringleaders, but अभी mastermind वगैरह भी है. पर ऐसा नहीं है कि हाँ अभी हम ये कहें कि इन तमाम 17 केसेस के 29 केसेस के अंदर में कोई ऐसा एक सिंगल जगह से उसको ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा था, ऐसा कोई अभी तक लिंकेज. Sir, there is no ruled out of organized crime behind this. जैसा मैंने अभी तक एक सिंगल कनेक्टेड पॉइंट इन सारे केसेस के. There are two specific cases that one in north and one in south. Vishaya Gowde has been already booked in a cheating case, I think nearly about 2-3 years ago. And secondly, in North Goa there is an allegation. We have not received any document, sir. But one of the complainants had filed a complaint in EOC, is what he says, about cheating. So the Margao case, Vishaya Gowde case, has it been charge sheeted or uska kuch status? That is the case. That case is under investigation with us. How long has it been? That is last year. Last year. That is last year, and one of the accused in that is not found by us. So we are on the trail of that accused also. Is it a same nature case or? Yes, it's a same nature case. But you said from 14 onwards this cheating is happening. 14 onwards. Time frame does it stand in the court like if it is translated or? Yes, moment they have come forward. Because the incident happened in 14 or 15. Yes, over the years things have happened. All these things have happened over the years. This duty, but people having instilled the confidence in have come forward now for giving these complaints. So the complaints have been registered. People have been coming. They have been duped. And so having instilled the confidence, they have come forward to give the complaints. So you see the spate of the complaints registered. And that's why you feel that there is some orchestrated. It's not orchestrated, it's standalone cases. Why it is now? Can you tell me why it is now that case? Is there any information about the case? It was filed in DOC. Had they filed anything? Or have you found out anything? अभी right now I will not be able to comment. Detail लेके हम. Sir, it is often argued that right देने वाले को भी we should punish. Is that something that the police is considering or they are encouraging? I think it was my question. What is the stand? I have already said that they have been duped. They have been duped by faking around that they have good standing, that they can facilitate them in giving the jobs. That's how they have been lured and they have been duped. Madam, why now, after so many years, means after at least 1 year gap or 10 years of this thing, why they have come now to register these cases? What
what was the reason behind the victims to come now after 14-15 cases were reported? This thing cheating were happened in 14-15. Now it is almost a decade now. Why after a decade victims felt that they should go to police and register a complaint? What was, how this, how accused prevented victims from coming to police all this while? ये कहना तो मुश्किल होगा कि हर एक केस एक जैसा होगा, बट ऑनरेबल सीएम ने भी बड़ा क्लियरली कहा कि अगर शुरू में जब एक केस रजिस्टर हुआ तो ऐसा अगर कहीं पे भी कुछ किसी के साथ हुआ है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड रजिस्टर द कंप्लेंट. आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस गिवन बाय द ऑनरेबल सीएम हैज वर्कड एज ए कैटलिस्ट एंड मेनी कंप्लेंट्स आर कमिंग. But don't you believe that so much confidence in that country wasn't to convince those for that government jobs who are being duped or not? It's really difficult to believe. So much confidence in those people to dupe these bonds on the pretext of giving them jobs for the past so many years. Cheaters have too much confidence. Cheaters have very great confidence. That normal, usual people say cheaters के पास ज़्यादा confidence होता है. And that's happened our policing service. बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे हो गया इनका? कैश में हो गया या कुछ? कितना मिला? बहुत सारी जगहों पे, मतलब अभी ये कहना कि सारे बैंक ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं है, पर बहुत सारी जगहों पे हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी मिले हैं. और जहाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं, they will serve as a good proof. जो इंटरोगेशन में कहीं थोड़ा बहुत भी निकला है कि इन लोगों में से किसी ने जॉब ऑलरेडी लिए हैं या कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई केस इन लोगों के इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन में नहीं आया है जिसमें ये है कि उन्होंने कहीं किसी को जॉब मिल दी है. Sir, so as we understand, just for like example sake, people gave money. आप कह रहे हो कि they were not given jobs. So and some cases have happened like 4 years ago. So for 4 years all these complainants were just sitting at home not coming. उन्होंने क्या बताया? Why the reason for not coming to the police in those 4 years? पैसे भी वापस नहीं किए. जॉब क्या आएगा? They were still hopeful. अभी एक्चुअली हम सारे कंप्लेंट्स के बिहार पे यहाँ बैठ के मैं इनको बताता हूँ. मे भी एसपी साहब अगर आपको इसके बारे में कोई स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं. If there is if somebody has said that why. No, they waited. They initially waited because in 2020-21 and all COVID became. So definitely people had no money as such. But then they were saying that because of all this financial crisis, everything has been stopped, and it will be taking up. It will be taking up. Then they said like 2022, we underwent elections. They said okay after the elections. Like that they went on prolonging them. They went on prolonging them. And when they came to know that now there is nothing happening, so first of all they did not even have any proof as such at times. So people who had proof, they went on asking for money. They said wait for a while, and that's how when one case started with, and when there was an appeal, as sir said, by Honorable CM, instilling confidence in the public that they should come out and give all the complaints so that everybody is. Complaints are registered. That's how many complaints have come, and we have been registering the complaints and investigating. So, any chances of this 29 cases to be taken over by crime branch from a one centrally located? वो मैंने पहले बताया कि अभी राइट नाउ ये डिसीजन नहीं है कि एक जगह उसको इकट्ठा किया जाए, बिकॉज ऑल पुलिस स्टेशन हैव बीन कंडक्टिंग दिस इन्वेस्टिगेशन वेरी प्रोफेशनल. पर जब डिसीजन अगर ऐसा कुछ होगा तो विल शेयर. Job is the police department. Police department in 29 cases में कोई है. सर अभी तक तो ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन में कैसे हुए हैं और वो कैश जो विक्टिम्स हैं उनको वापस दिलाने की किस तरह से? जो रिकवरी वाला पार्ट है वो स्पेसिफिकली पुलिस इन्वेस्टिगेशन का तो डोमेन नहीं है, और एट एनी स्टेप अगर ऐसा लगता है या इनिशिएट होता है किसी लेवल पे रिकवरी का, उसमें फिर मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसी या जुडिशरी आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ दैट. देन ऑफ कोर्स विल सी व्हाटएवर इज द रोल ऑफ द पुलिस विल प्ले. सर लास्ट टर्म में एक मिनिस्टर के ऊपर आरोप डाला था कि वो जॉब स्कैम कर रहा है, उसके बाद उसको मिनिस्ट्री से निकाला था. उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे क्या?
PWD. 2 years back, before the elections, if you remember. There were some allegations. I think सर ये पूरे जॉब स्कैम में एक सुसाइड हुआ है, इसके बारे में कुछ बोलिए। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक केस रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें अरेस्ट भी और कुछ नहीं। और 2 DGPs ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। Thank you.